हेलो एवरीवन, मैं हूं माधव और आप देख रहे हैं ज्ञानशाला विद मस्ती। आज मैं एक कोडिंग की वीडियो लाया हूं। तो आप सोचेंगे कि मैंने कोडिंग स्टार्ट कब करी। तो मैंने कोडिंग स्टार्ट अभी लॉकडाउन में ही करी है। मेरे को 3-4 वीक्स हो चुके हैं कोडिंग करते हुए। तो मैंने खूब सारे गेम्स और एप्स बनाए। जैसे मैंने एक डांस ट्यूटोरियल बनाया है और इसमें लोग डांस करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको म्यूजिक की आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैंने ब्राउजर ऑडियो ऑन नहीं कर रखा है, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं ला रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको भी दिखाता। आज मैं आपको फुटबॉल और एक और ऐप के बारे में दिखाऊंगा। और मेरा जो हैप्पी टीचर्स डे कार्ड है जो मैंने कोडिंग से ही बनाया है, वो भी आज मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले शुरू करते हैं हमारे फुटबॉल वाले गेम से। तो फुटबॉल वाला गेम कुछ ऐसा है। पहले मैं आपको खेल के दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इस गेम में। तो आपको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या खेल रहा हूँ। तो हम लेफ्ट और राइट एरो की से अपना लेग कंट्रोल करते हैं। आप देख सकते हैं मेरा ये जो लेग है, इसको हम कंट्रोल करते हैं और ऊपर से एक बॉल लॉन्च करके आती है फुटबॉल। हमें उसको अपने पैर से टकराना होता है। अगर वो नीचे चली जाती है तो अपोनेंट का एक पॉइंट स्कोर हो जाता है। जैसे उधर आप देख सकते हैं मैंने एक बॉल मिस कर दी, अपोनेंट का स्कोर बढ़ गया। अगर हमारी पैर से हिट हो जाती है और गोल में चली जाती है तो हमारा 1 पॉइंट हो जाता है। तो ये काफी सिंपल सा हमारा बॉल वाला गेम था, फुटबॉल वाला। तो इसकी कोडिंग कुछ ऐसी है। हम इसमें बस इसको कंट्रोल कर सकते हैं हैंड को। तो पहले हमें एक सेट करना होता है इसमें सीन। जैसे पहले इसमें बास्केटबॉल वाला आता है डिफॉल्ट, तो हम इसको चेंज करना होता है। तो हमने इसको सॉकर में चेंज करा है। हाँ, तो फिर हम एक सॉकर की बॉल भी लेंगे। जब हमने सीन सॉकर का सेट करा है, हम फिर एक नई बॉल थ्रो करेंगे क्योंकि बॉल डिफॉल्ट में नहीं आती है। फिर अपना हम प्लेयर सेट करते हैं। हमारे प्लेयर आप देख सकते हैं डिफॉल्ट स्क्रीन में एक ब्राउन कलर का हैंड होता है। तो हमें उसको सॉकर खेलने के लिए लेग में बदलना होता है। और हम स्पीड भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्लेयर की स्पीड फास्ट सेट कर रखी है और बॉल की स्पीड वेरी फास्ट। नहीं तो अगर बॉल की स्पीड कम होगी तो गेम बहुत बोरिंग हो जाएगा। और व्हेन राइट एरो और लेफ्ट एरो तो हम अपने लेग को कंट्रोल कर सकते हैं उससे। फिर ये है व्हेन बॉल हिट्स प्लेयर। हम साउंड प्ले करते जो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने ब्राउजर ऑडियो ऑन नहीं कर रखा है। तो हम बाउंस करवानी है हमें बॉल को जब भी वो प्लेयर से हिट हो, और जब बॉल को भी हिट हो तब भी हमें बाउंस करवानी बॉल को। और जब बॉल गोल में होगी तो हमें चीयरिंग वाला साउंड भी चाहिए। हमें एक पॉइंट भी स्कोर करना है और डिफिकल्टी लेवल हाई करने के लिए हमें 2 न्यू बॉल थ्रो करनी है। आप कितना भी लेवल बढ़ा सकते हैं पर 2 भी बहुत हार्ड हो जाता है। और जब भी बॉल प्लेयर से मिस करती है तो एक विसिल का साउंड प्ले होता है और अपोनेंट पॉइंट स्कोर कर लेता है। तो अब हम देखते हैं दूसरा ऐप। इसकी कोडिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। ये गेम अगर आपको आती हो कोडिंग करनी तो ये 2 मिनट्स में बन जाएगा।
तो अब हम हमारा दूसरा वाला गेम देखते हैं. So first see the Happy Teachers Day card. So this is the another lab, that was the sports lab. This is the another lab. So let's see the Teachers Day card. So you can see that start button is there, so you have to click on it. So I have written teachers are teaching in this tough time. Then click on the circle after reading this. So I've clicked on the circle. So they guide us in every situation. There's a compass. So I've written here, click on the compass. So I've clicked on it and the background has changed. So Happy Teachers Day, ma'am and sir. Thank you very much. So this is the coding you can see at the right hand side. This is the whole coding made. Okay, so now let's see another project. So let me show you my app which I've made by doing very hard work. That is opening, it's taking a lot of time. So it has opened now. So let's play it. So first I will tell you how do we play it, or you will get confused. So first we click on the start button and then we have the blue drone. And 3 to 4 drones are there. If we hit those 3-4 drones, we will get out, and our aim is to touch the octopus. Okay. So our aim is to touch the octopus without getting touched to the drones and the rocket. And then we will get the helmet that is at the top. So let's click on start. See, you have got out. So we can start again. So it's very hard to play this game. It takes a lot of time. So let's do it until we win. So we have won. It is showing that you won. Click on the helmet. If we will click on the helmet, so we will win it. So this is the coding. This is very long. It took me 3 to 4 hours to make this game. So I have coded, and the 3-4 drones are controlled by the computer. I am not controlling it, and we have to control the blue drone by clicking on the up, down, left and right arrow keys. So let's see another one. So let me show you the area and perimeter calculator of square, rectangle and equilateral triangle. So here are those. And I have also created an app that will calculate age in hours. So first, we have not developed right angle triangle calculator now. It is in developing phase. We are stuck on one place in the right angle triangle. So here's the coding. There are very small codings in these calculating apps. So you have to type here anything, any number. Enter the length of the side of the equilateral triangle. So I had done anything and calculate area and perimeter. So you can see area and perimeter have come. So like this, all of them are there: equilateral triangle, rectangle and square. Now we will see
Now they have made a junk food identifier app also. It's a silly app. It does not do anything much. So it just tells you which food is what. If when it touches any food, if the color will turn red, so it is a junk food. So you will think it is a very silly game. So let's see another game. So let me show you the Flappy game. Where is the Flappy game? I just can't find it. I think we have to make it only. No, this is our game. It has been saved. So let's play it. We have to click. We have to pass through the obstacles. And when we hit the ground, the game is over. So it's not a big deal to make this game. It's very easy also to play this. So this was for today. I will come with new video of coding also. Okay, bye bye. We'll meet in the next video.